Okay, so sorry, I actually forgot to unmute myself. I'm so sorry. Yeah, so now, so first of all, good morning traders. Welcome back to Quantsapp and welcome back to yet another webinar. So आज के पर्टिकुलर सेशन में आई वाज सेइंग कि आज के पर्टिकुलर सेशन में हम ऑप्शन बैक टेस्टिंग, मतलब हमारा कोई भी ऑप्शन स्ट्रैटेजी जो है उसको कैसे हम जाकर के बैक टेस्ट कर सकते हैं यूजिंग बैक टेस्टिंग टूल इन आवर एप्लीकेशन, वो हम समझेंगे इस पर्टिकुलर सेशन के थ्रू. सो I have found out some of the strategies जो एक particular time frame में they work very good. So I will share that with you all as well. And none but not the least, अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी स्ट्रैटेजी है जो आपको बैक टेस्ट करना हो, the chat box is all yours. You can just spam your strategy which you want to back test in the chat box. तो अभी आता है पहला. I was explaining कि बैक टेस्टिंग हमें क्यों करना चाहिए. Now let's say कि I want to initiate a bull call spread in Nifty, but मुझे नहीं पता that whether that strategy is proven enough to I should go ahead and invest my hard earned money, right? So history is something which might keep on repeating, correct? So what we will do is we will try to look at the historical data, and एक strategy में होता क्या है कि कोई कोई strategies में एक sweet spot होता है that strategy will perform very good in a particular time. So हम वो particular sweet spots भी analyze करेंगे using the back testing. So अभी आते हैं बैक टेस्टिंग हमें कब करना चाहिए. आइडियली वी विल ट्राई टू डू बैक टेस्टिंग ऑफ आवर स्ट्रेटजीज लाइक ऑन द वीकेंड्स. जब हमें वीकेंड हमारा प्रोडक्टिव बनाना होता है ना, तब हम इस टाइप का टूल यूज करेंगे, क्योंकि मंडे जब मार्केट ओपन होगा दैट यू नो ओके दीज आर द बंच ऑफ द स्ट्रेटजीज जो हैव बीन परफॉर्मिंग सिग्निफिकेंटली गुड आउट देयर इन द मार्केट. करेक्ट, नंबर वन. नंबर टू, इसको हम देखेंगे फ्रॉम एन पर्सपेक्टिव ऑफ एन पोजिशनल ट्रेडिंग, राइट? क्योंकि बैक टेस्टिंग हम जब भी कर रहे हैं इंट्राडे स्ट्रेटेजी का बैक टेस्टिंग करके, you know there would be a lot of mismatches which will happen. Okay, so intraday back testing, it depends. Intraday trading specifically depends on what the market's condition are, but talking about strategies, definitely we can go ahead and back test it in the back testing tool in Quantsapp. So back testing tool हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में accessible है as well as our desktop version. To access it on desktop version, web.concept.com is the link. So the link would be also there out here in the chat box. So abhi let's first understand what the markets are talking right now. एक बार देखते हैं कि markets का what the status of the market is. Even I don't know, so I am checking it. So market breadth totally in hands of bears. सिर्फ 9 stocks long पे है. Short side पे 130 FNO instruments है. एंड टॉकिंग अबाउट निफ्टी, आज के दिन में 1.5% से नीचे गिर चुका है. एंड बैंक निफ्टी फ्रंट में देखेंगे 1.9%, लगभग 2% यहाँ पर बैंक निफ्टी हमें गिरता हुआ नजर आ रहा है. अगर ओवाई डेटा के बारे में बात करें बैंक निफ्टी, सो बैंक निफ्टी 36,000 पे एक सिग्निफिकेंट क्वांटम ऑफ पुट ओवाई है. सो ये हमारा सपोर्ट आइडियली एक्ट करेगा अंटिल हम ये नहीं देख पाए कि यहाँ पर काफी ज्यादा पुट में शॉर्ट कवरिंग्स हो रहा है. दैट माइट बी एन इंडिकेशन ऑफ अगेन अ सपोर्ट गेटिंग ब्रोकन. अगर हम निफ्टी का एनालिसिस देखें, सो दिस इज वी आर डूइंग जस्ट फॉर जस्ट टू स्टे अपडेटेड विद द मार्केट. देन वी विल हम आएंगे हमारे टॉपिक से लेकर के. तो अगर हम देखेंगे 17,000 पे एक सपोर्ट है. 14 लाख पुट आज ऐड हुआ है, बट 15 लाख कॉल भी आज ऐड हुआ है. सो एक टसल हो रहा है यहाँ पर 17,000 के स्ट्राइक पे. तो अगर हम ये पर्टिकुलर डेटा, एक हिस्टोरिकल डेटा हम कंपेयर करेंगे, सो अगर हम देखें निफ्टी अगेन एक शॉर्ट कवरिंग के साइकिल पे है. सो आई हैव सेड इट मल्टीपल टाइम्स कि निफ्टी में जब तक एक काफी लंबा शॉर्ट कवरिंग नहीं आता है फॉलोड बाय सम लॉन्ग बिल्टअप्स, until then nifty still bees on the short side, correct? and talking about bank nifty front, तो बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखें तो सिमिलर कुछ हमें मूव देखने मिल रहा है. बैंक निफ्टी ज्यादा वीक है यहाँ पर, क्योंकि इतना पूरा बड़ा डेटा में अगर हम 8 ऑफ नवंबर से देखेंगे या 9 ऑफ नवंबर से देखेंगे, 1 2 ये वाला लॉन्ग अनवाइंड हुआ, राइट? सो इन दिस बिग डेटा, तो अगर हम ट्रेडिंग सेशंस की बात करेंगे, सो 28-30 ट्रेडिंग सेशंस ओवर अ मंथ टाइम, बैंक निफ्टी में सिर्फ 2 लॉन्ग बिल्टअप आया, व्हिच इंडिकेट्स द बेयर्स एग्रेशन. ठीक है. अगर हमें यू कैन आल्सो यूज द टेलीग्राम बॉट. तो अगर लेट्स से आई वांट टू नो द इंडेक्स कंट्रीब्यूटर्स कि अभी इंडेक्स कंट्रीब्यूटर कौन है, which stocks are driving the index higher, I don't know, or actually dragging the index down. So हमें सिर्फ इतना करना है @QNTAP bot, okay, and let's say Nifty contributors. Okay, in next to no time the bot will arrive with the help. So here it is. Okay, just ये link आता है, इस पे क्लिक कर देना है.
हमें ये पता लग जाएगा निफ्टी कितने पॉइंट से आज नीचे है। सो निफ्टी 250 पॉइंट से लगभग नीचे है आज। एंड गेनर्स के बारे में बात करेंगे। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, आईटी पैक एक परफॉर्मेंस में है। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ऑयल एंड आईसीआईसीआई बैंक इज ड्रैगिंग द इंडेक्स डाउन. So you can all refer to you can tag Quantsapp bot on your Telegram groups and the Quantsapp bot will revert you with the solutions. तो अभी आते हैं आज के टॉपिक को लेके which is back testing. So as I explained, back testing करना इसलिए जरूरी है because I can't go ahead and place my hard-earned money randomly in any strategy, right? Until and unless there is some stats, there is some data to prove that strategy. So we will use the tool of back testing to go ahead and understand that. So उसके पहले what I'll try to explain is I'll explain कि यहाँ पर input क्या देना है हमें. Okay. So let's say first I can select my instrument कि मेरा instrument क्या है जिसमें हमें back testing करना है. Start date. So now the tool is asking you कि from when you wanted to start your back testing from. So let's say I want to start my back testing from 2019. Let's say October. ठीक है, 1st of October 2019 से लेकर के अभी तक हमें बैक टेस्ट करना है जो भी हम स्ट्रेटेजी का इनपुट देंगे आपको. Now the tool is asking कि okay आपको एंड कब करना है बैक टेस्टिंग. लेट्स से करंट डे. यू कैन गिव व्हाटएवर योर इनपुट्स आर. लेट्स से करंट डे. ओके, कि कोई भी एक स्ट्रेटेजी ये टाइम फ्रेम में कैसा परफॉर्म करता आ रहा होता था इन द पास्ट, फ्रॉम द पास्ट, इट विल शो अस दैट इन नेक्स्ट टू नो टाइम. ओके, तो अभी आती है बारी लेग्स ऐड करने की. ओके, सो अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली बिकॉज दिस इज द क्रूशियल पार्ट ऑफ द बैक टेस्टिंग. कि बैक टेस्टिंग में ये अगर हमने मिस्टेक कर दिया तो आवर एंटायर स्ट्रैटेजी विल कुछ अलग स्ट्रैटेजी हम बैक टेस्ट कर बैठेंगे. सो ये स्ट्रैटेजी का जो मतलब जो इनपुट्स है, so you if possible you can note it down too. So whenever we are picking up call options, कि जब भी हम एक call option pick करते हैं, so our values would be 0 becomes my at the money. कि जब जब हम 0 इनपुट देंगे इसका इंडिकेशन ये है कि हम at the money वाला strike price we are picking up. कि I want to go ahead and pick up at the money call strike. Whenever I am typing -1, indication of I want to go ahead and do an actionable buy or sell. वन स्ट्राइक इन द मनी कॉल. ओके, बाजार अभी 17,000 पे है. एक स्ट्राइक इन द मनी कॉल ऑप्शन कौन सा हो गया? लेट्स से एट द मनी 17,000. सो वन स्ट्राइक इन द मनी बिकम 1750 का स्ट्राइक प्राइस. करेक्ट. सो दैट बिकम्स माय एंड वन स्ट्राइक इन द मनी कॉल ऑप्शन. ठीक है, -1 वन स्ट्राइक इन द मनी कॉल. मार्केट्स ट्रेडिंग एट 17,000. 16,950 इज द स्ट्राइक प्राइस. अगर आपको 16,950 स्ट्राइक प्राइस के साथ कुछ करना है then you will type -1. -2 becomes 2 strikes in the money. Okay, so I guess I am back. Okay, I'm sorry. So let me just repeat and I hope the stream is going fine. Okay, so I'll repeat what the values are. 0 मतलब at the money. 0 indication of you are going for an at the money strike price. Okay, call strikes में. -1 मतलब आप एक स्ट्राइक इन द मनी कॉल ऑप्शन जाके बाय या सेल कर रहे हैं. मतलब लेट्स से बाजार अभी 17,000 पे है, एट द मनी 17,000. वन स्ट्राइक इन द मनी जो भी कॉल ऑप्शन होगा वी आर गोइंग अहेड एंड बाइंग दैट. -2 2 स्ट्राइक्स इन द मनी. -3 3 स्ट्राइक्स इन द मनी. आउट ऑफ द मनी कॉल के लिए +1 टाइप करेंगे हम. एक 2 strikes out of the money call के लिए we will type +2 and 3 strikes out of the money के लिए we will type +3. Okay, so I'll just explain it in a much more simpler way. ठीक है, आपको inputs क्या देना है. So let's go to chain. So if I see this is my option chain, let's pick up Nifty. Okay, so option chain in Quantsapp updates in real time. Okay, so अभी whenever I am going for an at the money call strike, ठीक है, कि जब भी मुझे बाय या सेल करना है डजंट मैटर कि मैं बाय करूंगा या सेल करूंगा. एक एट द मनी कॉल स्ट्राइक मुझे अगर बाय करना है, सो दिस वुड बी माय स्ट्राइक. करेक्ट. एंड माय इनपुट वुड बी 0. ठीक है, that whenever I am picking up this at the money strike price, my input would be 0.
एंड कमिंग टू नाउ वन स्ट्राइक इन द मनी कॉल, ठीक है, कि जब जब मुझे ये स्ट्राइक प्राइस, ओके, दिस स्ट्राइक प्राइस आई वांट टू गो अहेड एंड बाय इट, ओके, बाय और सेल इट, आई विल टाइप -1, ठीक है, सो आई विल टाइप -1 इन दिस सिनेरियो, ओके. सिमिलरली और मुझे डीप जाना है, आई विल टाइप -2, -3, -4, ओके. सो टू मेक इट मच मोर सिंपलर, ठीक है, दिस बिकम्स माय एट द मनी कॉल, बराबर, ये हमारा एट द मनी कॉल हो गया. सो यहाँ पर आई विल टाइप 0, ठीक है. सो दिस इज माय स्ट्राइक प्राइस ऑफ 0. जो भी मेरा इन द मनी ऑप्शंस है, आई विल टाइप माइनस फॉर दैट, आई विल गिव अ नेगेटिव इनपुट बिकॉज दो स्ट्राइक्स आर इन द मनी, ठीक है. जो भी मेरा पॉजिटिव स्ट्राइक्स है, आई विल टाइप पॉजिटिव बिकॉज दोज आर माय आउट ऑफ द मनी कॉल्स, ओके. सो लेट्स से इफ आई वांट टू ड्रॉ इट, so let's say this is something which will be negative, okay, this will be by default 0, okay, and this will be positive, ठीक है. So these are my inputs, this becomes my +1, okay, this becomes my +2 and this becomes my +3, ठीक है. ऐसे करके जितना हम डीप लेकर जाएंगे उतना वो टूल कंसिडर करेगा, एंड वाइस वर्सा फॉर द पुट स्ट्राइक्स, ओके. पुट स्ट्राइक्स में थोड़ा सा इट वुड बी डिफरेंट, लेट्स से 17,050, दिस विल अगेन बी माय एट द मनी, तो एट द मनी हमेशा 0 होगा, करेक्ट. जब पुट स्ट्राइक के लिए हम जाते हैं तो ये पुट ऑप्शन मेरा हो जाएगा एक आउट ऑफ द मनी पुट, करेक्ट. सो इन दिस सिनेरियो आई विल टाइप माइनस फॉर दिस, ओके, आई विल गो अहेड एंड टाइप माइनस फॉर दिस, एंड यहाँ पर जितने भी इन द मनी पुट्स है आई विल टाइप पॉजिटिव फॉर दैट, ठीक है. सो दिस इज माय सिंपल इनपुट्स. आई विल रिपीट, एट द मनी के लिए फॉर कॉल साइड आई विल टाइप 0, one strike in the money call, I'll type -1, 2 strikes in the money call, I'll type -2, 3 strikes in the money call, I'll type -3, okay. Now coming to out of the money calls, 1 strike out of the money call, I'll type +1, 2 strikes out of the money call, I'll type +2, 3 strikes out of the money call, I'll type +3, and for put option it will be vice versa. So 0 remains at the money. If I want to go 1 strike out of the money put, I'll type -1, 2 strikes out of the money put option, ये सारा OTMs है, right, all these are OTMs for put, so I will type negative for those, and यहाँ पर whatever the in the money puts are, we will type positive for it. So चलते हैं अभी कुछ strategies which I have in mind, I'll just try to quickly backtest those. So let's say I'll go to backtesting, and एक simple सा एक bull call spread पहले backtest करके देखते हैं, that what the result would have been for bull call spread, okay, simple bull call spread. Let's say Jan 1st of Jan से अभी तक का बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, add like call option, I am buying 2 strikes in the money call, add like, okay, call option, I am selling 2 strikes out of the money call option, ठीक है. एक इन द मनी हमने खरीदा, 2 आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक हमने बेच दिया. बाजार 17,000 पे, लेट्स से 16,900 आपने जाकर के खरीदा, 2 स्ट्राइक इन द मनी कॉल, एंड आपने 17,100 वाला कॉल जाके आपने बेच दिया, 2 स्ट्राइक्स आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन, ओके, हिट ऑन एड लेग. अभी द टूल इज आस्किंग यू कि आपको वीकली में करना है ये ट्रेड या मंथली में करना है. लेट्स से हमें वीकली में करना है, 6 दिन मतलब फ्राइडे हम ये ट्रेड में एंटर लेना चाहते हैं, ओके. वी आर एंटरिंग द ट्रेड 6 days बिफोर द एक्सपायरी. सो अभी हमें यहाँ पे टूल क्या पूछ रहा है, तो टूल हमें ये पूछ रहा है दैट हाउ मेनी डेज देयर आर लेफ्ट टू एक्सपायरी व्हेन वी आर एंटरिंग द ट्रेड, कि कितने दिन एक्सपायरी को बाकी है जब हम ये ट्रेड में एंटर ले रहे हैं. लेट्स से 6 days देयर आर लेफ्ट टू एक्सपायरी व्हेन वी आर एंटरिंग द ट्रेड. ट्रेड एग्जिट व्हेन वी आर गोइंग टू एग्जिट द ट्रेड, 0 बिकम्स माय एक्सपायरी डे, मतलब हम एक्सपायरी वाले दिन पे ही एग्जिट कर रहे हैं. हम 1 टाइप करते हैं, मतलब एक्सपायरी को 1 दिन बाकी है तब हम एग्जिट कर रहे हैं. सो बेसिकली यहाँ पे हमें ये इनपुट देना है कि एक्सपायरी तक कितने दिन बाकी है व्हेन वी आर प्लानिंग टू एंटर, ओके. सो दिस इज 1 कि हम एक्सपायरी के 1 दिन पहले वी आर प्लानिंग टू एग्जिट, ओके. वीकली में हम कर रहे हैं. जस्ट एट बैक टेस्ट, ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम, ये सब क्या है, दैट इफ यू वांट यू नो कि वही स्ट्रैटेजी फिल्टर हो जहां पर एटलीस्ट इतना क्वांटिटी ऑफ ओपन इंटरेस्ट था, राइट, only then that strategy will be eligible, तभी वो बैक टेस्टिंग में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. सेम इज द केस विद वॉल्यूम. एंड टारगेट स्टॉप लॉस वुड बी आपका एब्सोल्यूट पीएनएल पे, तो वो हम देखेंगे आगे. तो अगर हम देखें ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी, सो 30th Jan 2019 से अभी तक
ये स्ट्रैटेजी ने 52,800 का रिटर्न हमें प्रोवाइड किया है विद स्ट्राइक रेट ऑफ 57% ओवर ईयर। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, दिस इज माय नेट पीएनएल। ये हमें स्ट्रैटेजी ये भी बता रहा है, द टूल इज आल्सो शोइंग अस विन काउंट, कि आपका प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजीज कितना था, लॉस काउंट हाउ मच टाइम्स यू मेड अ लॉस, टोटल काउंट मतलब पूरा स्ट्रैटेजी आपने कितने बार इनिशिएट किया, तो आपने 134 टाइम्स ये इनिशिएट किया, 76 टाइम्स आपको प्रॉफिट हुआ, 58 टाइम्स आपको लॉस हुआ, एंड 52,000 इज द नेट प्रॉफिट विच इज सिग्निफिकेंट। अगर हम देखें एवरेज विन पीएनएल 3,300, मैक्स विन इज 5,700, कि मैक्सिमम जो भी आपका प्रॉफिट हुआ था वो 5,700 था, उसके ऊपर नहीं था कुछ भी। एवरेज ऑन एन एवरेज आपने 2,000 3,200 रुपया यू मेड अ प्रॉफिट। टोटल विन पीएनएल की आपका मैक्सिमम जो प्रॉफिट था, लाइक द टोटल प्रॉफिटेबल पीएनएल दैट वाज 2 लाख ऑलमोस्ट 50,000। Average loss, फिर the rest the things remain the same. Profit factor is, you can call it reward to risk. It divides total win PNL by total loss PNL. Total win PNL divided by total loss PNL is your profit factor. ठीक है? So 1.3 का ये this strategy is giving us a reward to risk. Let's try to अभी now tweak it. ठीक है? कि इसको थोड़ा tweak करते हैं. Let's say ये वाला हम back test करके देखते हैं. कि अभी आई हैव जस्ट डन अ स्मॉल चेंज, जहां पर हमने ट्रेड एग्जिट लिया एक्सपायरी वाले दिन पे, रेस्ट एवरीथिंग द सेम। ओके, सो इफ यू सी डायरेक्टली, जस्ट बिकॉज आई एग्जिटेड ऑन द एक्सपायरी डे, डायरेक्टली माय जो मेरा जो प्रॉफिटेबिलिटी है दैट ऑलमोस्ट गॉट डबल, राइट? 57 से सीधा 1,20,000 के आसपास तक आ गया है। माय स्ट्राइक रेट इंप्रूव्ड टू, आल्सो माय मैक्स विन, टोटल विन improved a lot. Also, my reward to risk improved a lot. If I didn't have backtesting tool, I would have never known this, right? So this is bull call spread is one of the proven strategy, which the historical backtesting shows us कि आप अगर 6 दिन पहले फ्राइडे को अगर हम एंट्री लेते ये स्ट्रैटेजी में एंड एक्सपायरी डे पे एग्जिट लेते, देन वी वुड हैव मेड दिस काइंड ऑफ एन रिटर्न इन सिंपल बुल कॉल स्प्रेड, जहां पर 2 स्ट्राइक इन द मनी कॉल हमने खरीदा, 2 स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन हमने बेचा, एज सिंपल स्ट्रैटेजी एज दैट। तो नाउ लेट्स ट्राई टू गो अहेड एंड डू अ रेशियो ऑन दिस। ठीक है, ये जो बेचा हुआ कॉल है, लेट्स से इसका क्वांटिटी हम डबल करते हैं। ओके, सो आई एम डूइंग अ रेशियो। सो दिस इज हाउ सिंपल दैट अगर इफ बैक इन दोज डेज जहां पर वी ऑलवेज नीड टू हैव दिस डेटास ऑन एक्सेल, जहां पे हमें मैन्युअली जाकर के स्ट्राइक फेच करना पड़ता था, सो डोंट नीड टू डू दैट। you can drop the old school way of backtesting your option strategy. आप backtest कर सकते हैं directly in the backtesting tool in our application. So in next to no time you can keep on doing this scans over here. Let's say कि अभी ये 6 दिन पहले एंट्री लिया है हमने, रेशियो कॉल स्प्रेड है एंड एक्सपायरी दिन तक हमने होल्ड किया है, सो रिटर्न इज नॉट दैट सिग्निफिकेंट। एक बार देखते हैं कि अगर हम 3 दिन पहले एंट्री लेते हैं ये स्ट्रैटेजी पे, ओके, विच इज वेडनेसडे, then comes Tuesday and then Monday. Okay, so हमने लिया ये स्ट्रैटेजी, एंट्री हम we did it on the Monday. Okay, so again not a significant return. Let's say 2 दिन पहले हम एंटर करके देख लेते हैं, okay, what is the return. Yeah, if you have any doubts or queries, you can keep me posted in the chat box. And one last time I'll also repeat what the inputs we need to give. Okay, तो यहाँ पर अगर हम देखें, so ratio call spread in Nifty works best अगर हमने 2 दिन पहले एंट्री लिया, which is Wednesday becomes my एक day 1 day before the expiry, Tuesday becomes my 2 days before the expiry. तो अगर हमने 2 दिन पहले एंट्री लेते हैं हम ये स्ट्रैटेजी में, which is on Tuesday, and exit करते हैं हम Thursday को, this strategy gives a significant return. ओके, अभी एक दिन करके देखते हैं, देन वी विल मूव टू सम अदर स्ट्रैटेजी। स्टॉक स्पेसिफिक भी आते हैं, इट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। टारगेट प्रॉफिट स्टॉप लॉस, इट वुड बी द एब्सोल्यूट अमाउंट, कि अगर आपका वो एब्सोल्यूट अमाउंट ब्रीच हो गया, देन द स्ट्रैटेजी आपको इग्नोर कर देगा, या तो इट विल शो अस दैट वे। इट इज द एब्सोल्यूट अमाउंट जो आपको इनपुट देना है। तो अगर हम देखें अगेन 1 डे एंटरिंग 1 day prior, the expiry we enter the strategy and expiry day तक होल्ड करते हैं,
Again 61,000 of net return we are making this strategy. One last time, let's say 2 दिन पहले एंटर करके 1 दिन पहले निकालते हैं रेशियो स्प्रेड को, तो क्या होता है? Okay, yeah, by the way, the prices which right now the backtesting tool is fetching, that is the EOD prices कि हमने end of the day strategy में entry लिया and end of the day पे strategy exit किया. So not a significant kind of return, right? So the sweet spot for this strategy is 3 दिन पहले आप expiry के entry कर सकते हैं and exit on the expiry day. Okay. So ये था Nifty में. Now let's try to go identify for stock specifically. Let's say Infosys. तो यहाँ पर स्टॉक्स में there is an amazing thing which is called as result based backtesting. Okay, कि कोई एक स्ट्रेटेजी रिजल्ट के पहले कैसे परफॉर्म करता आ रहा है, रिजल्ट के बाद कैसे परफॉर्म करता आ रहा है, it shows us that. तो अभी now it doesn't require me to tell you, I have told this multiple times कि ना रिजल्ट के बाद the IVs collapse, उसके वजह से कॉल एंड पुट प्रीमियम दोनों टूट जाता है, राइट? लेट्स से कि हमने एवरी टाइम 0 एट द मनी का कॉल बेचा हमने, ओके, पुट ऑप्शन सेल एट द मनी एवरी टाइम, ओके. हमने कौन सा बैक टेस्टिंग कर रहे हैं? रिजल्ट बेस्ड, ओके, कि रिजल्ट के बेस पे हम बैक टेस्टिंग कर रहे हैं. सो द पैरामीटर फॉर बैक टेस्टिंग इज बेस्ड ऑन रिजल्ट. नाउ लेट्स से कि द टूल इज आस्किंग हाउ मेनी डेज बिफोर द रिजल्ट यू एंटर दिस स्ट्रेटेजी. लेट्स से आई एंटर्ड 1 day बिफोर द रिजल्ट, तो आई विल टाइप -1. रिजल्ट के 1 दिन पहले अगर हम एंट्री लेते हैं ये स्ट्रेटेजी में, वी विल टाइप -1. रिजल्ट के 2 दिन पहले हम एंट्री लेते हैं ये स्ट्रेटेजी में, वी विल टाइप -2, -3, -4, so on goes the input. Let's say 1 दिन पहले हमने ये स्ट्रेटेजी में एंट्री लिए, okay, that we entered this strategy on 1 day before the result. Let's say कल रिजल्ट है, हमने every time 1 दिन पहले whatever the condition is we are entering that, okay. ट्रेड एग्जिट कि हमने रिजल्ट के कितने दिन बाद we exited the trade, okay. मतलब रिजल्ट is 0, before result is minus, after result is positive, okay. So let's say I hold this trade for 5 days. एक दिन रिजल्ट के पहले एंट्री लेकर के रिजल्ट आने के 5 दिन बाद हमने ये ट्रेड एग्जिट किया. मेरा ट्रेड क्या है? मेरा ट्रेड इज सिंपल, एट द मनी कॉल एंड पुट सेलिंग, ओके. So I get a strike rate of 75% with, you know, winning amount of almost 9,000 over here, and rest the things remain the same. तो यहाँ पर नुकसान थोड़ा ज्यादा है because obviously it is a short straddle. तो थोड़ा डेज के साथ ट्वीक करके देखते हैं व्हाट इज द स्वीट स्पॉट इन इट. लेट्स से 0. तो अभी नाउ आई एम गिविंग इनपुट कि रिजल्ट वाले दिन पे एंट्री लेना है एंड 5 दिन बाद एग्जिट करना है, ओके. अगेन द सेम थिंग, नथिंग वर्क्स. लेट्स से 5 या 4 दिन करके देखते हैं. व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव ओवर हियर इज कि हम ऐसा स्ट्रेटेजी ढूंढ रहे हैं जो रिजल्ट के बाद एक स्वीट स्पॉट काइंड ऑफ थिंग ढूंढ रहे हैं कि ओके, इतना दिन होल्ड करने से पास्ट में ये स्ट्रेटेजी ने अच्छा रिटर्न दिया था, सो वी आर प्लानिंग फॉर दैट. तो यहाँ पर अगर हम देखें, सो दिस इज द काइंड ऑफ यू नो थिंग व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट. 0 कि रिजल्ट वाले दिन पे हमने एंट्री लिया एंड 3 days पोस्ट द रिजल्ट वी जस्ट एग्जिटेड आवर स्ट्रेटेजी. एक बार 2 days आफ्टर द रिजल्ट करके देखते हैं. इट गिव्स अस, ओके, सो या दिस इज व्हाट वी आर एमिंग. सो अगर हम देखें 86% का स्ट्राइक रेट विद 26,600 का नेट पीएनएल, ओके. कितने ट्रेड्स में? 60 ट्रेड्स में, 7 ट्रेड्स इन जस्ट 7 ट्रेड्स, जिसमें से सिर्फ एक ट्रेड आपका नुकसान हुआ, रेस्ट ऑल द ट्रेड्स वर विनिंग ट्रेड्स फॉर अस, ओके. तो यहाँ पर अगर हम टेबुलर व्यू देखेंगे, सो यू विल गेट टू सी व्हाट डेट यू मेड एन एंट्री. तो आपने ये दिन पे एंट्री लिया है एंड यू एग्जिटेड इट ऑन दिस डे, ओके. रिजल्ट डेट 13th of October, ओके. सो यू विल डायरेक्टली गेट टू सी कि क्या दिन पे क्या रिजल्ट आया है आपका, ओके. एग्जिट इफ हॉलीडे देन व्हाट, कि अगर हॉलीडे होगा तो पहले एग्जिट लेना है हॉलीडे के या बाद में लेना है. लेट्स से आफ्टर करके देखते हैं एक बार, ओके. सो इफ यू सी दिस डेट इज 14th of October, तो रिजल्ट हॉलीडे होगा मे बी, इसलिए पहले एग्जिट ले लिया स्ट्रेटेजी में. सो इफ यू सी नाउ इट हैज एग्जिटेड ऑन 18th of October बिकॉज देयर वुड बी एन हॉलीडे. सो एज सिंपल एज दैट. सो या अगर हम देखें, यू विल गेट टू सी द नेट स्ट्रेटेजी वाइज पीएनएल एज वेल ओवर हियर, ठीक है. तो एक बार एक आईटीसी का देखते हैं, ओके. One last time. So if you have any strategies to be backtested, you can post it out in the chat box. Let's say ITC एक oscillating stock है, but every time अगर हम पूरा महीना straddle लगा करके छोड़ेंगे, short straddle, it will not give us a lot of money, right?
सो अगर हम देखेंगे, लेट द डेटा स्पीक, लेट्स से ऐड मंथली एक्सपायरी, ठीक है। लेट्स से हम 20 दिन पहले हम इनिशिएट करते हैं एंड एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं, ठीक है। We are creating a short straddle on ITC because it is an, it has oscillated a lot of time. So it gives us a net return of 1,53,000. Okay, as high return as 1,53,000. Let's say I want to go ahead and do it कि 15 days के बाद में क्या रिटर्न आता है कि अगर हम 15 days पे एंटर करते हैं एंड एग्जिट लेते हैं on the expiry day. So you see my profitability keeps on increasing. Let's say 10 दिन 10 days we enter a short straddle on ITC and exit it on the expiry day. So let's try to go ahead and do that. So अगर हम देखेंगे 10 दिन अगर हम पहले शॉर्ट स्ट्रैडल करते हैं एंड अगर हम एग्जिट करते हैं उसको एक्सपायरी डे पे, I'll make a profit of, I had made a profit of 2,66,000. So yeah, I would say that was something which was from my side, just to sum it up what we understood. So backtesting is a tool which should be used especially on a weekend. So that is the reason we planned this thing on weekend, or I would say on Friday. So you can all, backtest some of your strategies in backtesting tool in our application. Be prepared for the upcoming trading sessions ahead. Now to come to give you all a quick summary, what we understood today is कि बैकटेस्टिंग आपको एक स्ट्रैटेजी आपका है वो कैसे परफॉर्म करता आ रहा है इन द पास्ट, इट शोज अस दैट, okay, because you want to participate in a proven strategy, in a known law strategy, number one. Coming to the number 2 point, which is the input, I'll repeat the inputs for one last time, okay. If needed, you can make a note of it. So if I'm going, just focus on at the money first. अगर हम at the money का call option buy या sell कर रहे हैं, I will type 0. If I'm going for one strike in the money call, which is if I'm going and buying, let's say 17,000 का call option, okay, 176 rupees वाला, I will type -1 कि एक strike in the money call option हम buy कर रहे हैं. अगर हम 16,950 pick करना है, I'll type -2 indication I'm going for 2 strikes in the money call. Similarly 17,100 out of the money call के लिए I'll type +1. +2 for 17,150 call, indication of a positive, मतलब हम एक out of the money call, 2 strikes out of the money call पे participate करना चाहते हैं, okay. 0 at the money, in the money for call negative, and out of the money for call is positive. फिर आपको कितना deep जाना है, the choice is all yours. Now talking about put side, तो put side के लिए भी the logic is the same. The moment you go below the current price, you will need to type minus. The moment you go above the current price, you need to type positive, ठीक है. put side का एक बार simplify करते हैं. 1750 का put at the money है तो I will type 0. 17,000 का put एक out of the money put है, I will type -1. 16,950 का put is 2 strikes out of the money put, I will type -2. Similarly एक in the money puts के लिए we will type, go ahead and type positive कि 17,100 का put के लिए +1, 17,150 के पुट के लिए +2, 17,200 के पुट के लिए +3. So yeah, I would say that was it from my side. And last thing is backtesting tool in our application considers the backtesting based on end of the day data. So if you are taking an entry 6 days before the expiry, what does that mean is that you are entering based on the prices on Friday end of the day, and you are exiting your trade based on the prices as on the Thursdays end of the day. अगर आपका expiry input है तो वहां पर अगर आपने 0 input दिया. So basically the prices which the backtesting tool considers right now is an EOD basis. So further we understood a bull call spread works good 6 days before the expiry and exiting on the expiry day. Then we understood ratio works good in Nifty अगर हमने उसको रिजल्ट के लेट्स से आई वुड से एक्सपायरी के 2 दिन पहले इनिशिएट किया एंड एक्सपायरी डे पे एग्जिट किया, दैट इज द टाइम व्हेन रेशियो वर्क्स गुड. टॉकिंग अबाउट आईटीसी में हमने एक शॉर्ट स्ट्रैडल देखा, देन 10 days before the expiry and exiting on the 0 day has given a significant return. And last thing we also analyzed result based backtesting कि रिजल्ट के पहले एंड बाद में एक स्ट्रेटजी कैसे परफॉर्म करता है, वी विल गेट टू सी दैट. तो हमने इन्फोसिस में समझा कि रिजल्ट के दिन पे अगर हम शॉर्ट स्ट्रैडल करते हैं एंड 2 या 3 दिन बाद हम एग्जिट करते हैं, इट गिव्ड अ सिग्निफिकेंट रिटर्न ऑफ 27,000 रफली ऑन जस्ट 7 ट्रेड्स, जिसमें से 1 वाज अ लॉस
and rest 6 trades were in profit. So yeah, I would say that was it from my side. Thank you so much for staying tuned up till here. Do backtest your option strategies in backtesting tool in Quantsapp. Thank you so much. Have a happy trading ahead.